Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 8, the Earth's weather and climate. यानी कि हम ज़मीन के वेदर और क्लाइमेट के बारे में, मुख्तलिफ जो मौसम है यहाँ पे उनके बारे में जो है हम जानेंगे इस यूनिट में. So आज इसका इंट्रोडक्शन है. Let's quickly move forward. So my dear students, in this unit, these are the student learning outcomes that will be covered, and these are for the parents and the teachers to understand that by the end of this chapter, all the students will be able to understand these points or objectives. So my dear students, in this chapter, हम क्या-क्या सीखने वाले हैं? Let's have a look. Weather and climate are two distinctive phenomena of the world that directly affect life, country's economy, nature of people, biodiversity and ecosystem. In the following chapter, we will study these phenomena in detail. So my dear students, weather और climate दोनों ही जो हैं वो ऐसे phenomena हैं. एक तो ये दोनों अलग हैं, ठीक है, ये एक जैसे नहीं होते, they are totally different. और किस तरीके से ये हर चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी सराउंडिंग्स को, इंसानों को, जानवरों को, पौधों को, हर किसी के ऊपर जो है इनका जो है वो एक ख़ास और गहरा असर है. सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये चेंज होते हैं, क्या चीज़ें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको चेंज करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं क्लाइमेट के और वेदर के. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द lecture number 1. So in lecture number 1, the students will be able to understand the difference between weather and climate. So सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि ये दोनों totally different है. इनमें क्या difference है, बच्चे जो है weather और climate के difference के बारे में lecture number 1 में जानेंगे. Then in lecture number 2, the students will be able to relate the weather, that is daily variations in temperature, humidity, precipitation in the form of rain and snow, clouds and wind. Changes with changing geographical location. So my dear students, बच्चे जो हैं different elements जो हैं weather के उनके बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से geographical location change होने से ये change हो जाते हैं. They will discuss that. So जो elements इसमें discuss किए जाएंगे, they are temperature and wind. Then in lecture number 3, again same ऐसे लो discuss होगा, but this time students will discuss about humidity, clouds and precipitation. Then in lecture number 4, the students will recognize that average temperature and precipitation can change seasons and location. So किस तरीके से seasons और location change हो सकते हैं temperature और precipitation की वजह से. They will discuss it in lecture number 4. And the lecture number 5 will be the review of this chapter, जिसमें जो है बच्चे तमाम SLOs को discuss करेंगे one by one. और उसके बाद by the end I will provide you with an assessment sheet ताकि आप लोगों को evaluate किया जाए. So आप लोग इसमें weather और climate से related बहुत कुछ understand करेंगे. So stay tuned for lecture number 1. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.